check definition of electrode potential. The potential developed at a metal electrode is due to the tendency of a metal of electrode either to release electron or to accept electron. If a metal of an electrode has a tendency to release electron and to get oxidized, the potential developed at that electrode will be oxidation potential, and it will be represented as EOX. And if a metal of an electrode has a tendency to accept electron and to get reduced, the potential developed at the metal electrode will be called as reduction potential, E0 rate. Therefore, we have written here the potential developed at a metal electrode is due to the tendency of metal of electrode either to release electron or to accept electron. If a metal of electrode has a tendency to release electron and to get oxidized, the potential developed at the metal electrode is oxidation potential, and it is represented as EOX. If the metal of an electrode has a tendency to accept electron and to get reduced, the potential developed at an electrode is called as reduction potential and is represented as E rate. Suppose we are having this electrode, this metal electrode. If the metal of this electrode has a tendency to release electron, then the potential to release electron and to get oxidized, the potential developed at this electrode will be EOX. If the metal of this electrode has a tendency to accept electron, then the potential developed at this electrode will be reduction potential or E rate. If a metal has a tendency to release electron and to get oxidized, the potential developed at this electrode will be oxidation potential, it will be called as EOX. If the metal of this electrode having a tendency to accept electron and to get reduced, the potential developed at this electrode will be reduction potential, it will be called as E rate. Therefore, the oxidation potential is just opposite to reduction potential. That is, oxidation potential, EOX, is opposite to E rate. Therefore, it is written here E rate or E rate is opposite to EOX. Therefore, it is written here that E rate is opposite to EOX. Suppose for zinc electrode, if EOX is plus 0.76 volt, therefore its E rate will be minus 0.76 volt. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बिल्कुल सही परिभाषा, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी मेटल इलेक्ट्रोड पर डेवलप होने वाला, पैदा होने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस मेटल की या इलेक्ट्रॉन देने उस इलेक्ट्रोड के मेटल की, उस इलेक्ट्रोड के मेटल की इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी पर निर्भर करता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड की मेटल की इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो मेटल इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हम इसको EOX से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसी इलेक्ट्रोड की मेटल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तो उस मेटल इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कराएगा, और उसको हम ही रेड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पे ये सब लिख दिया गया है। अब मान लो हमारे पास एक ये मेटल इलेक्ट्रोड है। अब इस मेटल की अगर इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन देकर अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, और इसको हम EOX से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसी इलेक्ट्रोड की मेटल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तो जो यहां पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसको E0 E रेड से प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि E रेड जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है यानी E रेड जो है, वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बिल्कुल अपोजिट है, विलोम है, उल्टा है। यानी हमने यहां लिख दिया, इसलिए E रेड इज अपोजिट टू EOX। मान लिया हमने जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है, तो फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
under standard condition, that is at 1 atmospheric pressure and 25 degree centigrade temperature. At 1 atmospheric pressure and 25 degree centigrade, if the metal electrolyte concentration is taken as 1 m or metalline concentration is taken as 1 m. Suppose this is electrolyte, after ionization it gives metal ion and sulfate ion. If electrolyte concentration is 1 m, then metal ion concentration will also be 1 m. Therefore, if electrolyte concentration is 1 m or metal ion concentration is 1 m, then the potential developed at the junction of electrode and electrolyte, the potential developed at the junction of electrode and electrolyte is called as standard electrode potential. If it is being developed due to oxidation process at electrode, then it is called as standard oxidation potential, that is E0 ox. And if it is being developed due to reduction process at electrode, it is called as standard reduction potential, E0 red. Now, in European convention, E0 ox is taken as standard electrode potential, and in American convention, our IUPAC system, E0 red is taken as standard electrode potential. Since to nowadays we are following IUPAC system, therefore nowadays E0 red is taken as standard electrode potential. We have written here that nowadays, since we are following IUPAC system, therefore we will take E0 red as standard electrode potential. Now in numerical problem, if standard electrode potential is given, it means E0 red is given. You will not take it as E0 ox. You will take it as a E0 x. I am repeating it again. If suppose in numericals, standard reduction potential is given, you will take it as in a numerical problem. If suppose standard electrode potential is given, then standard electrode potential will be E0 red, not E0 ox. Standard electrode potential विद्युत मानक विद्युत विभव. अब स्टैंडर्ड कंडीशन में, यह मानक परिस्थितियों में, यानी मानक परिस्थितियां क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हमें 1 m लेनी है, यानी मेटालाइन कंसंट्रेशन हमें 1 m लेनी है. तो मान लो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइज होकर एम आइन और सल्फेट आइन दे रहा है, अगर MsF4 की कंसंट्रेशन 1 है तो मेटालाइन की कंसंट्रेशन भी 1 m होगी. तो हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 m लें या मेटालाइन कंसंट्रेशन 1 m लें, बात एक ही है. अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 m लेंगे मतलब मेटालाइन कंसंट्रेशन भी 1 m होगी. तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 m ले रहे हैं या मेटालाइन कंसंट्रेशन 1 m ले रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 m ले रहे हैं या मेटालाइन कंसंट्रेशन 1 m ले रहे हैं, तो कुछ जगह पर जहां पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर ये ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो कहलाएगा E0 ऑक्स, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 ऑक्स. अगर ये रिडक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 रेड. अब यूरोपियन कन्वेंशन में हम E0 ऑक्स को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं. यूरोपियन कन्वेंशन में हम E0 ऑक्स को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, जबकि अमेरिकन कन्वेंशन में यानी IUPAC सिस्टम में हम E0 रेड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं. और आजकल हम IUPAC सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. तो जब IUPAC सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा हम E0 रेड को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे. अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी मेटल्स का या मेटल इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाते हैं तो समझ लेना कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं, उनको तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा. ये हमें ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त.